Good morning, children. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom. Children, in continuation of our chapter number 4 of Science, Heat, today's video's topic is Transfer of Heat, Part 2. We are going to discuss here. In a previous video, we discussed there are 3 modes of transfer of heat, and they are conduction, convection and radiation. And along with that, we started the detailed study about the conduction also. We discussed that conduction takes place in the solid states of matter. We discussed one activity also to prove that heat can be conducted easily in the solid metal. Solid matter के अंदर से heat का conduction कैसे होता है? And we also discussed certain conditions which are required for the conduction of heat, right? In today's video, we are going to study in detail about the conduction. Student, this conduction of heat, it varies from one substance to the other substance. All the substances cannot conduct the heat with the same intensity. There are few substances which can conduct easily heat through them, and there are certain substances through which heat cannot be conducted easily. And on that part, the metals, जितने भी materials हैं, they can be classified into 2 major groups. These are good conductors and bad conductors, or called as poor conductors. Let's talk about the good conductors. What the good conductors are? Good conductors are those substances which can conduct heat or electricity through them very well. वो मटेरियल्स जिनके अंदर से हीट बहुत इजीली पास हो सकती है, दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. Examples are all the metals like iron, copper, steel, rod. They are the examples of aluminium. They are the examples of good conductors. And on the other hand, the poor conductors or bad conductors, or they are also called as insulators. What they are, they cannot conduct heat through them. उनके अंदर से heat easily conduct नहीं हो सकती, pass नहीं हो सकती. That's why they are called as bad conductors or poor conductors of heat. The examples of bad conductors or poor conductors are rubber, plastic, wood. They are the examples of bad conductors of heat. Now, after discussing all these things, we need to discuss one activity here which will prove that certain objects are the good conductors of heat, whereas the others are bad conductors of heat. And to conduct this activity, what you need? You just need a glass tumbler filled with hot water. आपको glass tumbler use करना है, उसमें hot water pour करना है, and in that put just different objects. Say you can put a steel spoon in that, a wooden spatula, a glass rod, a plastic ruler, right? इन सब चीजों को आपने उसके अंदर insert कर दिया, and the another end they should be out of the water. जो उनके ends हैं, एक end तो water के अंदर dipped है और दूसरा end कैसा होना चाहिए? It should be out of the water, वो water से बाहर होना चाहिए. Let all these objects immerse in that hot water for a while, for 1 or 2 minutes. And after 1 or 2 minutes, try to touch their open surfaces. उनके जो ऊपर एंड है उनको हम 1 by 1 टच करके चेक करेंगे. We will find that metal spatula जो स्टील थी, स्पून स्टील थी या आयरन रोड थी, उनके ओपन एंड्स क्या हो जाएंगे? They will become warm up. But the plastic ruler or wooden spatula or glass rod, they will not become warm. वो उनकी surface warm नहीं हुई. Why does that happen? Because ऐसा क्यों होता है? Because that metals, they are the good conductors of heat. जिनमें से हीट का कंडक्शन हुआ, नीचे से ऊपर तक उनके अंदर हीट आ गई, उनके ओपन एंड्स वार्म अप हो गए. और जो प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, राइट, दे आर द बैड कंडक्टर्स. तो उनमें से हीट ट्रेवल करके ऊपर ओपन एंड तक नहीं पहुंची, तो वो वार्म अप नहीं हुए. So this activity proves that the materials are classified into the bad conductors and poor conductors of heat. Now at the last, let's discuss some of the uses of the good conductors and bad conductors in our in our day-to-day life. First use discuss करते हैं यहाँ पे in the cooking utensils. All our cooking utensils, they are made up of the good conductors of heat. राइट, एल्यूमिनियम है, स्टील है, इन सब चीजों से मिलके बने हुए होते हैं हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन दीज कुकिंग यूटेंसिल्स दे आर kept on some flame, बर्नर के ऊपर जब इनको हमने रखा है,
So these utensils can easily get heat from the burner. उनको burner से heat मिल रही है and that heat can easily transfer through them and can reach to the food and that will improve the speed of cooking of food. हमारा food जल्दी से इसके अंदर कुक हो जाता है, right? बात करते हैं second use of good conductors or bad conductors, that is the handles of cooking utensils. जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं जनरली दे आर मेड अप ऑफ दी पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, राइट? व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों? बिकॉज द हैंडल्स आर समथिंग फ्रॉम देम फ्रॉम विच वी कैन इजीली होल्ड दोज यूटेंसिल्स, जिनसे हम वो वार्म यूटेंसिल्स को होल्ड कर सकते हैं. तो अगर वो बैड कंडक्टर से मिलकर बने हुए होंगे तो पूरे यूटेंसिल्स में खाना कुक हो जाएगा, फूड प्रिपेयर हो जाएगा, बट उनके हैंडल अभी भी वार्म अप नहीं होंगे, सो दैट वी कैन इजीली टच देम, हम उनको होल्ड कर सकते हैं. वी कैन रिमूव देम फ्रॉम दी फ्लेम, उनको हम फ्लेम से दूर कर सकते हैं. थर्ड यूज इज ट्रैप्ड एयर इन वूलन कीप्स अस वार्म. जितने भी वुलन फाइबर्स होते हैं, देयर स्ट्रक्चर, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, रेविशियो शेप होती है वुलन फाइबर्स की, विच मेक देम बल्की, जिनकी वजह से वुलन फाइबर्स काफी बल्की हो जाते हैं. इन दोज बल्की स्ट्रक्चर्स ऑफ वुलन फाइबर्स अ लॉट ऑफ एयर इज ट्रैप्ड, उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर वो होल्ड कर लेते हैं. एंड स्टूडेंट, air and water, they are the poor conductors of heat. ये heat का conduction नहीं करते, so that the inner body heat of a body that cannot move out, वो बाहर नहीं जा पाती है sorry, when we are wearing the woolen fabrics in the winter. एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं. What happens when you are wearing only one layer of woolen fabric or you are wearing 2 or 3 different layers of woolen fabrics? At your home you must have observed, जो बिल्कुल small babies होते हैं, small children हैं, उनके साथ जनरली क्या करते हैं, in the winter season उनको mothers they prefer to give them 2 or 3 layers of different fabrics. उनको नीचे लेयर पहनाएंगे, उसके ऊपर एक और टी शर्ट उनको पहनाएंगे, उसके ऊपर एक और बहुत थिन टाइप का जो वुलन फैब्रिक है वो उनको पहनाया है, उसके ऊपर एक और मोटा जैकेट उनको पहना देते हैं, so that they look so गोलू मोलू in winter season, right? Right? So why do वो ऐसा क्यों करती हैं? Why mothers are doing so? Because these different layers of fabrics, they also have space in between them, and in that space air is again further trapped, जो उनकी अंदर की heat को बाहर नहीं जाने देंगे, will give them warm sensation, जो उनको warm sensation देते हैं. So it is preferable to use multi layers of fabrics in winters instead of using the single layer of fabric. Same thing is being used by the birds. Birds के जो feathers होते हैं, furs होते हैं, उनके अंदर भी air trapped रहती है. So birds क्या करते हैं, especially in the winter seasons, they fluff their feathers और furs, उनको बहुत ही fluffy बना लेते हैं ताकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा air trap हो जाए. And that air is a poor conductor of heat. उनके अंदर की बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती, again will keep them warm, उनको warm up रखने में वो help करती है. The next use is slabs of ice that are covered with sawdust or gunny bags. Why it is so? Because ice slabs, they can easily absorb the heat from the surrounding and can start melting. वो melt हो सकते हैं. To prevent their melting of those ice slabs, they are covered with the sawdust or gunny bags. What these sawdust and gunny bags do? These bags, gunny bags or sawdust, they trap air and they behave as insulator, जो हीट को अंदर नहीं आने देंगे, और हीट अंदर कांटेक्ट में नहीं आएगी आइस स्लैब्स के अंदर, तो उनकी मेल्टिंग अपने आप प्रिवेंट हो जाएगी. सो दीज आर सर्टेन यूजेस ऑफ द कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इन आवर डे टू डे लाइफ. In our next video, we'll discuss about the next mode of transfer of heat, that is convection. Till then, thanks for watching.